Om Shri Gurubhyo Namaha. After visiting Trichy, we moved to a village called Tirukundachappi, situated in the Queen of Hills, Ooty. This place is mainly consist of varieties of hill tribes like Badugas, Todas, etc. Swamiji has praised himself about the unique culture of this village. शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् It was on the 5th April, the day of Pangunethram celebration of the Vrindavana Sabha initiated by Swamiji at this village in the year 1912. Having received the invitation, we were very anxious to witness the amazing 111th year of celebration. We reached the place about 2 p.m. As we entered the premises, it was a visual treat to see the entire village having Mahaprasadam. The place was so colorful with natural beauty of flowers, plants, and trees, including people dressed in variegated colors. न भोगे न योगे न वा वाजिराजो न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वाञ्छितार्थम् पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. The main program started around 3 p.m. with the puja to the temple deities Lord Krishna and Swami Vilakshananda were decorated and were kept in the premises. The entire celebration was organized by the committee and it was presided over by Peru Radhenam, who blessed the function.
Dr. Mrs. Ananthakrishna, who has come to witness this function, was very much overwhelmed with joy. The people of this village had been pronouncing her to be the true representative, being the person associated with Paramatmaji from her childhood. Hence she was honored. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। शरीरं सुरूपं तथा वा करत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगे न योगे न वा वाजिराजो न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही
यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थम् पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா நிறைவேறுமாறு நிதியே நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரான் கோயில் புக்கு அழகிட்டு மொழிக்கிட்டு பூமாலை உணைந்தேற்றி புகழ்ந்து வாடி தலையார கும்பிட்டு கூத்து மாடின்னு சொல்லுவார். நல்லா பாடணும், பாடலுக்கு ஏற்ற வகையில நல்ல ஆடலை செய்ய வேண்டும். இதை அந்த காலத்துல அப்பரடிகள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள். அதை அந்த பாரம்பரிய மிக்கதாக இருக்கக்கூடிய முன்னோர்கள் காட்டிய அந்த நடனத்தை அப்படியே விடாமல் அதே சமயத்துல சாமி விளைச்சானந்த அவர்கள் சொன்னதனுடைய அந்த பஜனைகள் ரெண்டையும் சேர்த்து செய்வது சிறப்பு. அதே மாதிரி குன்றக்குடி அடிகளாருடைய வழிகாட்டுதல் படி பல அட்டிகளில திருமுறைகளை இந்த பஜனையோடு சேர்த்து பாடுவது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையில நிறைய அட்டிகள்ல பஜனையோடு சேர்த்து பாடுறாங்க. ஆனா இங்க நம்முடைய குந்த சபையில தான் இன்னும் தொடர்ந்து அத்தகைய வகையில திருமுறை பாடல்களை அந்த பஜனை பாடல்களோடு சேர்ந்து இப்பெல்லாம் நாம செய்யறோம். இதனால என்ன நன்மை அப்படின்னு சொன்னா இறைவனுடைய பாட்டை கேட்க கேட்க நமக்கு நிம்மதி. உடனே நம்ம ஆர்வம் பாருங்க, ஏதோ ஒரு வெறும் கேளிக்கை இல்லை, கொண்டாட்டம் இல்லை. இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடி நரம்புகளும் 72,000 நரம்புகள் சொல்றார்கள். அத்தனை 72,000 நரம்புகளையும் செம்மைப்படுத்துவது இந்த ஆட்டம். நம்ம அறியாமலேயே நாம செய்யறோம். அதே மாதிரி பாரம்பரியம் மிக்கதா இருக்கக்கூடிய கலாச்சாரத்தை பண்பாட்டை பாதுகாக்கின்றோம். இத்தகைய நல்ல விழாவிலே கலந்து கொண்டு இதை தொடங்கி வைப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். எல்லாம் வல்ல போற்றுதலுக்கும் நாளும் நம்மை நன்னெறிப்படுத்துவதற்கு முடிய அருள்மிகு அம்பலவான ஸ்ரீ விலக்ஷணானந்தம் சரணம் பிரபத்யே ஔதும்பர கல்பவருஷः காமதேனுஷ்ய சங்கமः சிந்தாமணி குருர்பாதோ துர்லபோ புவனத்ரயே சுதே ஜனார்தனோ தேவகாத்ரேகாயாம் யதுநந்தனः துவாபரே ராமகிருஷ்ணாய தரும் ஸ்ரீ விலக்ஷணானந்தः அழுந்தோறும் அணைக்கும் மண்ணை அறிவிலாரோடி ஓடி விழுந்தோறும் எடுக்கும் ஒப்பன் விளையாடும் பொழுது தோழன் தொழுந்தோறும் காக்கும் தெய்வம் சொந்தமாய் எடுப்பார்க்கெல்லாம் குழந்தை இப்படி குலாம் குருநாதன் வாழி வாழி மாசிலாமணியே போற்றி மாமரையாழா போற்றி தேசுரு கனியை போற்றி திகட்டிடாவுடே போற்றி காசினியோர் கெட்டாத கற்பகத்தருவே போற்றி வீசு வேதாந்தா போற்றி லட்சணானந்தா போற்றி. சரி
ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ After witnessing the function of this nature in a remote place like this would have bewitched any observer, the whole village was united, sincere, loving and moving like a single nucleus. With the blessings of Swami Vilakshananda, we have made an effort to explore about spiritual voyage. The contents conveyed so far in our episodes could be only meager like a drop in an ocean. Hence, we request the viewers to share their views and personal experience about Swamiji as a feedback. Om Tat Sat.